Good morning, dear students. Welcome to Path Online Tutorials. Students, before worksheets, we were doing the concept of database, in which we already discussed database, DBMS, RDBMS, and how to create different objects like tables and forms in RDBMS. Bache, what do you mean by RDBMS? RDBMS means Relational Database Management System. And which RDBMS we are using? We are using RDBMS of MS Office, that is MS Access. Okay. In MS Access, tables are used to store the data. Means tables are the basic building blocks which are used to store the data in the database. And what are forms? Forms provide a user interface through which user can enter or see the data of the database. Now the next object that we have to discuss is query. Now what do you mean by query? Query is a database object which is used to retrieve the data from the database according to some specified conditions. Query simple means question. If you want to ask some question from the database, or you want to retrieve the data according to your conditions from the database, then we use query. In general life or in daily life, we make several types of queries to get specific information. For example, which student are scoring above 85% marks, or which students live in sector 9 करनाल. मीन्स इस तरह से हम क्या पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं अकॉर्डिंग टू आर कंडीशंस. सिमिलरली वी कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ क्वेरी. अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट इज क्वेरी टेबल. जो हम क्वेश्चन पूछते हैं डीबीएमएस से, मीन्स डेटाबेस से, वो जो रिजल्ट आता है दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ टेबल, बिकॉज हेयर वी आर डिस्कसिंग RDBMS. और RDBMS में डेटा भी रिलेशंस की फॉर्म में स्टोर होता है, मीन्स टेबल्स की फॉर्म में आता है, स्टोर होता है. इसी तरह से जो हम इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ query table. Means what is query table? The information retrieved on the basis of specified criteria in the query is also stored in a separate table, and that table is known as query table. Now there are different types of queries in MS Access. It provides 5 types of queries. That is your select, parameter, cross tab query, action query and SQL query. Students, we will start with a very simple query, that is your select query, and we will discuss all these queries one by one. Now let's start with the select query and we will do it practically. Now let's start how to create a query in MS Access. For this we have to open the MS Access. ठीक है, हम एक डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस ओपन करेंगे. I have already created a database name as employee database. ठीक है, as you all know, this is a relational database management system, and in this the data is stored in the form of tables. डेटा किस में स्टोर होता है? MS Access में टेबल्स में स्टोर होता है. और हम क्वेरीज किस पे लगाएंगे? इन्हीं टेबल्स पे लगाएंगे. मीन्स हम इस टेबल्स में से अकॉर्डिंग टू आर स्पेसिफाइड कंडीशंस वी कैन एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम दीज टेबल्स. सो स्टूडेंट्स, हेयर मैंने 2 टेबल्स बना रखे हैं. वन इज योर एम्प्लॉय टेबल एंड सेकेंड इज डिपार्टमेंट टेबल. फर्स्टली वी विल लर्न हाउ टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम अ सिंगल टेबल. ठीक है, आफ्टर दैट वी विल लर्न हाउ टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स. बट फॉर दिस वी हैव टू क्रिएट द रिलेशनशिप. सो फर्स्टली वी विल डू द क्वेरीज और वी विल apply the query on a single table. Let's take a table that is employee table. Yes, चलिए इसका डिज़ाइन व्यू देखते हैं. इन डिज़ाइन व्यू आई हैव ऑलरेडी टेकन 4 फील्ड्स. ठीक है, नेम एज एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी,
एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। और डेटा टाइप का कंसेप्ट आपको पता है, एम्प्लॉय आईडी इज ऑफ नंबर टाइप एंड आई टेक इट एज अ प्राइमरी की। ठीक है, मैंने इसको क्या लिया हुआ है, प्राइमरी की, मीन्स हुज वैल्यू कैन नॉट बी नल, और जिसको आप एक तो नल नहीं रख सकते इसकी वैल्यू, मीन्स इसकी वैल्यू को आप खाली नहीं छोड़ सकते, एंड सेकेंड इट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। नाउ शिफ्ट टू द डेटा शीट व्यू। Now I have already entered the data in this table. Okay, I have 7 records in these tables, means there are 7 tuples. Okay, and how many fields are there? 1 2 3 4 fields are there, that is emp id, emp name, employee salary and employee department. Now apply a query on this. Now how to apply a query? Now for this you have to click on to the create. ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट और आई वॉन्ट टू रिट्रीव द डेटा ऑन some specified conditions. For this, to apply the query, you have to click on the create tab, and there are 4 groups in this. So you want to create a query. So there's 2 ways to create a query. Either you can create a query by using a query wizard, and second is by using a query design. Let's start with the query design. So to create a query, click on this query design. Now it will ask a show table dialog box will get open. Now on which table you want to apply the query, select that table. Suppose I want to apply a query on employee table, because I want to find out the name and ID of those employees that are working in a department 102. Okay, so click on add table and close this dialog box. Now this window is divided into 2 panes. लोअर पेन में, अपर पेन में आपके पास वो टेबल आ जाएगा on which you want to apply the query, and here you have to, in the lower pane you have to select the field that you want to display. ठीक है, जो आपका क्वेरी टेबल बनेगा, मीन्स जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसमें विच फील्ड्स यू वांट, सेलेक्ट दोज फील्ड्स। आई वांट टू डिस्प्ले एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम टेबल। सेकंड इज टेबल, किस टेबल का एम्प्लॉय आईडी डिस्प्ले करना है, एम्प्लॉय टेबल। सेकंड फील्ड इज आई वांट टू डिस्प्ले द नेम, एंड थर्ड थिंग इज आई वांट टू डिस्प्ले द डिपार्टमेंट. I want to display 3 fields: employee ID, employee name and employee department. I want to display all those records having the department value equals to 104. So जो lower pane है उसमें आपके पास 6 rows दिखा रहा है. One first is for field, second is for table, third is for sort. If you want to sort the values in resultant table on some field, you can sort from here. Show में show करेगा. Now it will show 3 fields. And next is criteria. I want to apply a condition or criteria on the query, in the query. So criteria is equals to, I want to display all the records of the employees working in 104 department. Okay, so here I write criteria equals to 104. और criteria किस पे लगाना चाहते हो, employee department number के ऊपर. So that is equals to 104. After creating this query, now you design a query. Now after creating, this is your select query, means I want to select employee ID, employee name and employee department from table employee whose criteria, what the criteria is, whose employee department equals to 104. Now run this query. If you want to get the result, click on this run from design tab. In results group there is a run command. Now click on this command, a query table will appear. Now this is the result of your query. It will show all the records having the department number 104. In this way you can apply a query.